Hi everyone, good evening. So we are back in live again with a very new chapter, of your emerge batch, and that is going to be the reproductive health. So इसके बारे में इस चैप्टर के बारे में आज डिटेल में हम स्टडी करेंगे and just a moment. All right. So basically आज हम इस चैप्टर के बारे में which is a very new chapter and that is going to be the reproductive health उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. All right. So in this chapter which is your reproductive health chapter, that this chapter is actually a kind of a very short chapter है, तो बहुत ही short chapter, but definitely इसके कुछ ऐसे crucial points and ऐसे crucial topics हैं that is actually related with the human reproduction. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट फिगर्स से, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स से बेसिकली रिलेटेड है, तो इसके बारे में आज हम डील करेंगे. So this part has been basically divided into two different sections, part 1 and part 2. Part 1 we will be doing it, we are going to do it today, and part 2 we will be doing it later on. All right, तो ये हम पूरा देखेंगे and you will be shared with all the PYQs as well. तो let's start now. So reproductive health, as the word is suggesting, that anything that मतलब ऐसा health जो हमारे reproduction pattern से related है, that is considered to be as reproductive health. उसको हम reproductive health basically consider करते हैं. All right. एंड इसमें समझ लीजिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है, इफ आई जस्ट टेल यू द नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो जब हमारे दिमाग में या जब हमें ये पूछा जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज समथिंग that is only related, is it only related to only the pattern of reproduction, या reproductively अगर कोई organism fit है तो क्या सिर्फ हम उसको reproductive healthy organism बोलेंगे? So नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता. You can say reproductive health actually is considered to be as a total well-being. मतलब एक ऐसा process जिसमें कि कोई भी person, that a person is mentally fit, वो मेंटली फिट होना चाहिए, then that person is socially fit, social fitness रहना चाहिए, that person should be physically fit as well. So mentally, socially, physically and emotionally, you can say emotionally fit as well. So ये जो चार एस्पेक्ट्स एक साथ मिलते हैं तो इसको हम टोटल वेलबींग कंसिडर करते हैं. These are actually considered to be as total well-being of a person. This we consider as a total well-being of a person. Clear? तो total well-being मतलब ये that the person is overall sound in health, बोल सकते हैं that overall the person is healthy both internally as well and both externally as well. मतलब वो बाहर से भी healthy है और internally भी healthy. So that is called as reproductive health. तो reproductive health का overall ये definition है कि person को इन सारे criterias में fit होना चाहिए. Reproductive health का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर कोई person सिर्फ और सिर्फ reproductive wise, that means reproduction wise fit है, तो ही सिर्फ उसको reproductive healthy organism हम consider करेंगे. All right. So that is the case. Now you can see कि यहाँ पे भी वही question पूछा है that what do we actually understand by this term? इस term का मतलब क्या होता है? कि reproductive health जब हम consider करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? So reproductive health is something that is considered to be like this. So this is something, the term simply refers to healthy reproductive organs with normal
फंक्शंस, मतलब हेल्दी टर्म से हमें यही पता चलेगा कि ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देखेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं, तब हमें ये पता चलता है दैट इट बेसिकली इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल। मतलब एक ऐसा एस्पेक्ट जिसमें कि इमोशनल अटैचमेंट भी है, सोशल अटैचमेंट भी है रिप्रोडक्शन का। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द WHO, व्हिच मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो मैंने आपको टोटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन का डेफिनेशन दिया है ना, दिस इज कंप्लीटली इन अकॉर्डेंस विद WHO। ये जो डेफिनेशन है ना, दिस इज कंप्लीटली इन अकॉर्डेंस विद WHO, which means World Health Organization। इन्होंने ये पूरा डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। So according to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. That means physical, emotional, behavioral, and social. All right. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be considered and might be called as the reproductively healthy organisms. So that is the case. मतलब इसमें पूरा ओवरऑल एस्पेक्ट लिया जा रहा है. Now, why is it significant to maintain reproductive health, and what are the methods that has to be taken up to achieve it? Let us just examine them. ठीक है. अब what are the different ways? क्या ways हो सकता है जिसके थ्रू हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. Now let us take a look into that aspect. Clear? तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें दिखता है that reproductive health और उनके problems as well as their related strategies as well. ठीक है. See, we know that India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain the total reproductive health as a social goal. So, India में मैं आपको बता दूं that India में family planning जो शुरू हुई थी, that means the process initiation जो हुआ था reproductive health का इंडिया में ना, वो in terms of initiation and practicing the family planning programs उसके तहत ही शुरू हुआ था. So in India, basically family planning programs that initiated in 1951. तो 1951 से एक अवेयरनेस शुरू हुआ था रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स, फैमिली प्लानिंग को लेकर के. All right. So these programs, which were called as the family planning program, they were initiated in 1951. Remember this date because this date is very, very important. All right. And were periodically accessed over the past decades. Periodically accessed over past decades कहने का मतलब ये कि कभी भी फैमिली प्लानिंग, कभी भी कोई प्रोग्राम अगर आता है ना हेल्थ को लेकर के या किसी भी फैमिली प्लानिंग को लेकर के, मतलब आप समझ लीजिए कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई प्रोग्राम इनिशिएट हो रहा है पब्लिक के लिए, सो वो कुछ ईयर्स को स्कैन करके होता है. ठीक है. ड्यूरिंग द पास्ट डेकेड्स क्या है, पास्ट ईयर्स क्या मतलब प्रोसेस रहा है, क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी है that has ultimately resulted into the rise in the population or decline in the population. तो ये कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हुए, काउंट करते हुए ना, ये पूरा चीज इसमें आता है. ठीक है. Now, improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name which is called reproductive and child healthcare programs. तो इंडिया में फिर बाद में ये हुआ, बाद में ये देखा गया कि इंडिया में एक RCH नाम से एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, you know, a program which is called as RCH, that stands for Reproductive and Child Healthcare Program. Child Healthcare Program. So इस नाम से इस पूरे प्रोसेस को, दैट मीन्स फैमिली प्लानिंग का या जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोसीजर्स थे या प्रोग्राम्स थे, वो सारे इसी प्रोग्राम्स में कल्मिनेट हुए थे.
तो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से. Now, creating awareness among the people about various reproduction related aspects and providing facilities and supporting for a building up of reproductively healthy society. These are the major tasks under these programs. तो मेन टास्क था, एज द वर्ड इज सजेस्टिंग, आपको इसमें वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि दैट दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद बिल्डिंग अप ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एक तो इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्डअप करने का मेन टास्क था, टू बिल्ड अप और टू बिल्ड, यू कैन से, टू बिल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो एक तो मेन टास्क ये था. एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जब ऐड हो गया ना, तो इससे ये देखा गया कि जो बच्चे द बर्थ ऑफ द चाइल्ड दैट वाज टेकन प्लेस, और जो बच्चे पैदा होते थे उनका whether they are in the fetus itself or whether they have been delivered, उनका एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे होगा, उनका इन्फेंट मोर्टालिटी, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट विच इज IMR और फर्टिलिटी रेट क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें देखी जाती थी. सो फॉर दैट पर्पज ओनली ये पूरा एस्पेक्ट जो है इसको बहुत ही टारगेट में रखा गया था. ऑलराइट, now with the help of audio visual and the print media, governmental and non-governmental agencies, they have been taking various steps to create awareness create करने के लिए बहुत सारे steps लिए गए थे. जब हम consider करते हैं ना, so there were many steps that were taken to create awareness. अगर मैं ये बोलूँ कि क्या steps था जिसके through reproductive health के towards में awareness create किया गया. So for creating awareness, you can say, for creating awareness towards reproductive health, various steps have been taken. बहुत सारे steps भी government and non-governmental organizations के through ना लिया गया था. ठीक है, जिसमें जैसे सबसे पहला तो एक ओपन कॉन्वर्सेशन होना शुरू हुआ. ओपन डायलॉग हैज टू बी देयर, है ना, डायलॉग्स हैज टू बी देयर. एंड दीज ओपन डायलॉग्स, ये जो ओपन डायलॉग्स होने चाहिए, ये ओपन डायलॉग्स ये बिटवीन पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स. सो ओपन डायलॉग्स हैज टू बी टेकन प्लेस between parents or friends, you can say, or family members, you can say, or any other relatives, with teachers also. ये सारे इसमें इंक्लूड किए कि ओपन कॉन्वर्सेशन होना चाहिए. ओपन डायलॉग्स किसके रिलेटेड होने चाहिए? सेक्स सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से. So any of the sex related aspects, there has to be a kind of an open dialogue with that. It shouldn't be ये जो टॉपिक होना चाहिए, it shouldn't be a taboo topic. तो उस चीज को बहुत इसमें कंसिडर किया गया था. Apart from that, the next thing that was very very important was this कि इसमें जो मेन बात आई वो ये कि sex education has to be given prime importance. सेक्स एजुकेशन को एक प्राइम इम्पोर्टेंस देना शुरू हुआ था इन केस ऑफ इंडिया. सो सेक्स एजुकेशन इन इंडिया का, दैट वाज द मेन थिंग दैट हैज टू बी इन फोकस. सो सेक्स एजुकेशन इन इंडिया. उसके बाद वेरियस मीडिया दे वर बीइंग यूज्ड, वेरियस मीडिया एडवर्टीजमेंट्स वगैरह चलते थे टीवीज पे, न्यूज़पेपर्स पे, for creating awareness for family planning and all those things. So media related, you can say, awareness were there, related awareness that was spread as well. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी मेंशन किया है कि there should be to create awareness among the people about the reproduction related aspect. Parents and other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. जो मैंने आपको बोला ना यहाँ पे open dialogues होने चाहिए, उसी के बारे में है. Now introduction of sex education in the schools. Sex education in India, definitely in Indian schools I can rather say, it would be rather more better in Indian schools. ठीक है.
So that should also be encouraged to provide the right information to the young as to discourage the children from believing in myth and having misconceptions about the sex related aspects. Then apart from this, there were other जो other kinds of sex related diseases हैं, अगर या sex related अगर aspects है उनके बारे में बात करना, that was also one of the major concerns. ठीक है, so इसमें वही हो जाएगा कि proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, which is safe and hygienic sexual practices, STDs which are sexually transmitted diseases, AIDS हो गए, इन सब के बारे में लोगों तक जितना से जितना पहुंचाया जा सकता है information. So that was the main prime focus and main prime importance during that time, given during that time, especially those in the adolescent age group, leading to a reproductively healthy life. Educating people also, especially fertile couples and those in marriageable age groups, about available birth control options. That means जितने भी contraceptive devices हैं, contraceptive methods हैं, उनके बारे में उनको aware करना, उनको ये बताना that family planning and birth control is so much very very important in our country. Then care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, then importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child. जो female feticide होता है उसको prevent करना, so definitely giving more importance, giving equal importance to both male and a female child as well, etc. So this would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. तो ये सारे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे ना जिन्होंने समझ लीजिए कि जिनको गवर्नमेंट ने भी एनकरेज किया था, एंड इट वाज आल्सो आवर प्राइम रिस्पांसिबिलिटी एज वेल कि इफ दीज थिंग्स वर एनकरेज्ड देन डेफिनेटली इट वुड हैव लेड टू अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. तो ये सारी चीजें. Now, awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex-related crimes, they need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them, and thereby building up a social, responsible, healthy society. Any kind of sex abuse practices or any kind of sex-related crimes, those have to be those have to be brought into limelight. वो सब पहले लाइमलाइट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो उन सब के बारे में भी एक अवेयरनेस क्रिएट करना, दैट वाज आल्सो द मेन क्राइटेरिया थ्रू व्हिच रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं. ठीक है, नाउ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. These are essentials to provide medical assistance and care to the people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. सीधी सी बात है भाई कि अगर reproductive health के awareness में कहीं भी उनके dissemination में उनके information को spread करने में अगर कहीं भी problem आया, so this can ultimately result into the creation of, or you can say in the problem of creating awareness in the reproductive health. So this is the case that you need to know it. So that is the case. ठीक है, तो वो आपको इसमें ध्यान में रखना है. अब जब इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, जब ये देखा गया कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है या इम्प्लीमेंटेशन का क्या सीन है, तो फिर एक टेक्निक जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा चली थी, दैट वाज कॉल्ड एज द एमनियोसेंटेसिस टेक्निक. दैट वाज कॉल्ड एज एमनियोसेंटेसिस. नाउ एमनियोसेंटेसिस जो है ना, एमनियोसेंटेसिस इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी एज अ fetal sex determination test. इसमें बेसिकली it's a kind of a fetal sex determination test. ठीक है, अब इसमें जनरली होता ये है, इसमें जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि इसमें जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि इस टेस्ट में यूजुअली किया ये जाता है that the amnion sac that surrounds the or cover the baby, जो बेबियों को
पूरा का पूरा जो एमनियोटिक सैक जो सराउंड करके रखता है ना, उससे एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके क्रोमोसोम के पैटर्न को डिटरमिन किया जाता है. And once the chromosome pattern of that of that amniotic fluid is determined, तो ये टेस्ट इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया था, so that in order to correct any kind of genetic disorders. All right, so this has been used for correctification. This has been used for rectifying, you can say, rectifying or to analyze also, or to analyze any genetical disorder in fetus. तो ये पता करने के लिए कि भाई फीटस में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, या फीटस में किसी तरीके का कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. बट दिस टेक्निक हैज बीन अल्टीमेटली मिसयूज्ड. दिस amniocentesis, this has been misused, and misuse इसका किया गया था in terms of female feticide. That means also called as killing the female child or the female fetus, you can say. लोगों ने फिर इसको फीमेल फीटिसाइड के तरीके से यूज करना शुरू कर दिया. तो जब गवर्नमेंट को ये पता चला, सो देन दे एक्चुअली बैंड इन दिस प्रोसेस ऑफ एमनियोसिंथेसिस. एमनियोसिंथेसिस को क्या किया कि कंप्लीटली बैन कर दिया, और अभी भी ये प्रोसेस बैन ही माना जाता है. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे वही चीजें मेंशन्ड है that implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis. तो amniocentesis पे एक statutory ban कर दिया गया था. All right, that means एक ऐसा ban जो कि legalized है by the government. All right, for sex determination to legally check increasing the number of female feticide. क्योंकि फीमेल फीटिसाइड का नंबर इसमें काफी बढ़ना शुरू हो गया था. फॉर दैट रीजन इट वाज प्रिवेंटेड. ऑलराइट, नाउ इसमें मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स दैट मेरिट द मेंशन इन दिस कनेक्शन. नाउ इन एमनियोसिंथेसिस, सम ऑफ द, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है एमनियन का. So in the amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells. तो fetal cells को या chromosomal cells को analyze करने के लिए लिया जाता है, and dissolved substances. Now this procedure is used to test for the presence of certain genetical disorders, such as, जैसे मैंने आपको बोला ना कि it is used to rectify or analyze any genetical disorders in the fetus. That can be Down syndrome, that can be hemophilia, sickle cell anemia, etc. That determines the survivability of the fetus. All right. Now इसमें जो मेन चीज इम्पोर्टेंट था वो ये कि इन सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का करेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन इसी टेक्निक के थ्रू पॉसिबल हो पाता था. ऑल राइट, बट वंस इट वाज इलीगली यूज्ड बाय द पीपल, तो इसको अल्टीमेटली फिर बैन कर दिया. सो दिस इज द केस. Now, research on various reproduction related areas, they were also encouraged. मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जो रिसर्च वाले एरियाज थे उनको भी काफी एनकरेज किया गया था. दैट वाज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज in order to find out new methods or to improve upon the existing ones. All right. Now, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मुझे बतानी है वो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, and that is called as Central Drug Research Institute. That is basically called as Central Drug Research Institute, which is shortly termed as CDRI, and this is in Lucknow. This is in Lucknow. CDRI, that means this institute is the first institute to develop Saheli.
to develop the oral contraceptive pill. In fact, I'll say first to develop the oral contraceptive pill, and that is called Saheli. This has been asked also. Remember, that is called Saheli. सहेली सबसे पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है विमेन के लिए, जो कि CDRI ने डेवलप किया था, जो कि लखनऊ में है. एंड सहेली का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि दैट दिस सहेली इज बेसिकली मेड ऑफ नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन. सो दिस इज यूजुअली नॉन स्टेरॉइडल. सबसे पहली चीज ये नॉन स्टेरॉइडल है. नॉन स्टेरॉइड्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स इसके बहुत कम होते हैं फीमेल के बॉडी पे. So very less side effects. Side effects are there, and apart from that, since it is not having any kind of very less side effects, and it is of non-steroidal preparation, that's why this contraceptive, that means Saheli, is having high contraceptive value. So इसकी contraceptive value भी बहुत ही ज़्यादा high मानी जाती है. So it is a high contraceptive value pill, you can say. It's a high contraceptive value pill. Clear? And this Saheli is also considered to be as once a week pill. मतलब हफ्ते में इसको एक बार लेना पड़ता है. ठीक है? For preventing any kind of pregnancy or conception. ठीक है? So that's why it is called as once a week pill. So that is the case. So इसमें यहाँ पे भी mentioned है that do you know that by scientists at CDRI सबसे पहला contraceptive pill इन्होंने ही develop किया हुआ था. Alright, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे. Now, better awareness about sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increase the number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increase in the medical facilities for all sex-related problems, etc. All indicates the improved reproductive health of the society. मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जितने एस्पेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े, इन एस्पेक्ट्स को अगर फॉलो किया जाता है, so this can result into a reproductively healthy society. ठीक है, ये हो जाएगा. Now let us just talk about the population stabilization का पार्ट. इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं. Now, population stabilization and birth control की जब हम बात करते हैं, so last century में जो overall development हुआ था, वो quality of the life of the people में हुआ है. Reason being is this, reason being ये हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे लोगों की you can say income बढ़ती चली गई, they were economically जैसे जैसे वो stable होते चले गए, so the quality of life of the people started improving, है ना. So that is the case. So however इसमें जो और सबसे important चीज ये है कि quality जो थी life of the people की कैसे improve हुई. So quality of people, or you can say quality of life of the people, in fact, of people that improved. So what was the factor that led to the quality of life of the improvement in the people? So सबसे पहला तो improved health facilities. So there were improved health facilities. Health infrastructure बहुत अच्छा हुआ. So for that reason, you can say life जो है लोगों का वो improve हुआ. Economic status was improvised, you can say. So improved economic status as well. ठीक है, तो financially भी वो stabilize होना शुरू हुए थे for that reason also. ठीक है. So however, increased health facilities along with better living conditions had an explosive effect on the growth of the population. अब जब ये दोनों चीजें हुई तो ये दोनों चीजें अल्टीमेटली पॉपुलेशन को बूम कर दिया. Population ultimately got boom. Boom means it actually got increased. काफी बढ़ गया. So that is the case. So world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to 6 billion by 2000,
and 7.2 billion in 2011. तो ये कुछ facts and figures हैं जो कि exactly तो ऐसे पूछे नहीं जाते, but आपको एक overall idea पता होना चाहिए. That's it. A similar trend was observed in India too. India में ये देखा गया था that population was approximately 350 million at the time of independence. लेकिन वो 2000 तक पहुंच गया था. Ultimately by 2000 वो billion mark को cross कर दिया था. मतलब million में था और वो 2000 तक independence के time it was in million. But 2000 तक आते आते that means 2000 तक reach होते होते ultimately that reached to that marked the billion one. So and it crossed 1.2 billion in May 2011. So there was a rapid decline in death rate, maternal mortality rate में and infant mortality rate में भी था. Rapid decline हुआ था दो चीजों में. There was a rapid decline in MMR and IMR. MMR stands for maternal mortality rate and जो IMR होता है this stands for infant mortality. So there was a rapid decline. Rapid decline क्यों हुआ था? Rapid decline इन्हीं इसके वजह से हुआ था. Why? Because there was improved health facilities that were provided. क्योंकि पहले के जमाने में उतना ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे, उतना ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड एंड इम्प्रूव नहीं था. लेकिन बाद में जैसे जैसे मैंने बोला ना कि इकोनॉमिक स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट आया, जॉब एम्प्लॉयमेंट आया, इंडिपेंडेंस हुआ, देन उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना शुरू हो गया. विलेजेस जो हैं वो फिर टर्न होने लगे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन में. अर्बनाइजेशन स्टार्टेड स्प्रेडिंग. ऑल दोज फैक्टर्स की वजह से इनमें डिक्लाइन होना शुरू हो गया. As well as an increase in the number of people in reproducible age are the probable reason for this. Through that's why RCH program के थ्रू ये देखा गया कि किस तरीके से हम इस population growth के रेट को स्लो डाउन करें. तो जब ये देखा गया ना तो it was only marginal. RCH program भी उतना सक्सेसफुल बाद में साबित नहीं हुआ. क्यों साबित नहीं हुआ? क्योंकि RCH programs के थ्रू सिर्फ हम अवेयरनेस फैला सकते हैं. ये देखा गया कि we were only creating awareness. As such there were no such impact. तो जो रिजल्ट था ना, रिजल्ट वाज लिटिल मार्जिनल, बहुत ही मार्जिनल था रिजल्ट. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं ना तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट वाज लेस देन 2%, मतलब इतना है. दैट मींस द रेट एट व्हिच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ऐसा बोल सकते हैं. However, such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements. सीधी सी बात है, अगर इस स्पीड से पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा it would result into the scarcity of various kinds of resources as well. जो basic resources होते हैं, food हो गया, space हो गया, water हो गया, इन सारे basic resources की scarcity भी करना शुरू हो जाएगा. That means start हो जाएगा. Therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. इसीलिए फिर गवर्नमेंट को एक अलार्मिंग सिचुएशन लगा कि नहीं भाई, अब किसी भी तरीके से इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें रोकना ही पड़ेगा. मतलब उसको एक तरीके से एक मार्जिनल हमें पॉइंट पर उसको लेकर आना है, सो दैट इट शुडंट गो इन अ वेरी स्टीप वे. सो दैट वाज द केस. ठीक है. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया था इसमें वो ये था कि स्मॉलर फैमिलीज को मोटिवेट करके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए उनको हम क्या करें, एनकरेज करें. दैट वाज द बेसिक थिंग्स एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सो यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया as well as in the posters or bills as such, जैसे कि वो हम दो हमारे दो वाला जो स्लोगन चलता है फैमिली प्लानिंग को लेकर के, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन. Then many couples like young, mostly the young urban working ones जो हैं, they have been they have been given the suggestion to adopt one child norm. जो normal educated लोग होते हैं उनको भाई educated लोग share के उनको ये बोला गया to have a one child policy or one child norm. Statutory raising जो था मैरिजेबल, जो मैरिज एक्ट के थ्रू जो एक एज होता है मेल्स एंड फीमेल्स का कि फीमेल की शादी इतने तक होगी एंड मेल्स शुड गेट मैरिड एट दिस एज ऑफ इट, वो भी इंक्रीज किया गया. सो फीमेल्स टू 18 years and that males to be 21 years. And incentives given to the couples with small families are the two of the other measures that were taken to tackle this problems. कि अगर ऐसा होगा तो government will also provide incentives from their side as well. So let us just describe some of the commonly used contraceptive methods जो कि help किए in preventing the unwanted pregnancy as well. बहुत सारी चीजें हैं. अभी हम बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के कि क्या क्या मेथड्स होता है जिसके थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन दैट मींस कंसेप्शन
को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दैट वाज द केस. ना अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली वो ये हो जाएगी दैट एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no or less side effect. Now let me tell you one thing. That means just a second. Yeah. So let me tell you about first about the contraceptive method. तो contraceptive method है क्या, है ना? Contraceptive methods. So contraceptive methods are such methods that actually prevents or avoids any unwanted pregnancy. So if a couple is wishing to prevent any unwanted pregnancy, तो उसको उन methods को हम consider. This can be natural, this can be anything. So contraceptive methods are the devices, you can say, are the devices or methods that prevents unwanted pregnancy. Clear? जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को ये प्रिवेंट कर सकता है. सो इट कैन बी आइदर नेचुरल, इट कैन बी फिजिकल बैरियर्स के फॉर्म में हो सकता है. तो अलग अलग हम इसको देखेंगे अब इसमें. ऑलराइट, नाउ लेट अस टेक अ लुक इनटू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस. तो इसमें सबसे पहला जो चीज हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. डिवाइसेस तो बहुत सारे होते हैं बट द फर्स्ट कम्स आउट द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. Clear? ये वाला पार्ट हो जाएगा. Now, when we talk or when we consider about the natural method of contraception, so this basically, this works on the principle कि किसी भी तरीके से sperm का and ovum का जो chances है meeting का उसको prevent करना है. ठीक है? So to basically avoid any chances of meeting. So to avoid any chances of meeting between sperm and egg. Now this natural method of contraception, these are of primarily three types. It can be either through periodic abstinence, या तो periodic abstinence हो जाएगा, या तो withdrawal और coitus interruptus जिसको हम बोलते हैं, coitus interruptus, or it can be through your lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. This will be the case. तो ये मेथड्स होता है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा नेचुरल मेथड जो होता है कॉन्ट्रासेप्शन का वो बेसिकली प्रिवेंट होता है. क्लियर? दिस इज द केस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो होता है दिस इज वन सच मेथड जिसमें कि जनरली जो कपल्स होते हैं दे यूजुअली अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और कोइटस फ्रॉम 10 to 17 days of the menstrual cycle. So from 10 to 17 days of the menstrual cycle, why? Because that 10 to 17 days of the menstrual cycle is the day of ovulation. क्योंकि वो ovulation का day होता है. So ovum is definitely released during that phase. So अगर हमें किसी भी तरीके से chances of meeting को prevent करना है ना, तो उसके लिए this is the case that during that period of time the chances periodic abstinence has to be there. That means
no kind of coitus or sexual contact has to be there between the couples. So when the ovulation could be expected. So this is the case. Now, as chances of fertilization are very high during this phase, so that's why it is called as the fertile period also. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conceptions जो होंगे, that means pregnancy जो होगा, that can be ultimately prevented. All right. Now, the second important point is the withdrawal or the coitus interrupters. Now, this is again one such natural way of preventing any chances of pregnancy or preventing any chances of contact, you can say, between a sperm and an egg, in which the male partner usually withdraws his penis from the vagina of the female just before any kind of ejaculation has to be there, so as to avoid the insemination process. इसमें basically insemination process को prevent करना होता है. So the male partner is usually responsible for preventing any kind of insemination in the female vaginal tract. तो ये हो जाएगा. And the third important, the last factor is the lactational amenorrhea, which is considered to be as the absence of menstruation. See, lactational amenorrhea का मतलब हो जाएगा कि जैसे कि वो जो lactation का period होता है, ठीक है? That means when a mother is in a milk feeding phase or in a breastfeeding phase में जब वो रहती है, so during that phase, the important thing to note is that कि जब lactating, intense lactating जो mothers होते हैं ना, उनके केस में उनके बॉडी में GnRH एक हार्मोन होता है, which is called as gonadotropin releasing hormone, GnRH hormone. So this gonadotropin releasing hormone, इनका concentration काफी कम हो जाता है. And once ये lactating mothers के condition में मैं बात कर रही हूँ, तो क्योंकि ये हार्मोन कम हो जाता है ना, तो इस हार्मोन से रिलेटेड जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं लाइक LH and FSH, उनका concentration भी कम हो जाता है. And once those concentration comes up, उनका concentration जब कम हो जाएगा तो menstrual cycle maintain नहीं हो पाएगा, and that's why there is no menstruation. So that this is also again a natural. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ lactating mothers में होता है, and this is only effective up to 6 months of pregnancy. That's it. तो इसकी बहुत ही short duration का method होता है. So this is a method which is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the intense lactation. Remember this. Following parturition. Parturition मतलब डिलीवरी के बाद जो lactation का phase होता है, जिसमें mother will start producing milk, उस time पे menstruation होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये GnRH हार्मोन का लेवल जो होता है ना, ये काफी कम हो जाता है, और ये अगर कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है LH and FSH, ये दोनों के दोनों जो हार्मोन होंगे ये भी कम हो जाएंगे, और ये दोनों कम हो जाएंगे तो menstruation cycle properly चलेगा ही नहीं, तो there will be no menstruation. That's why. ठीक है? Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a period of 6 months following parturition. As no medicines or devices are used in these methods, side effects इसमें होते ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो 3 मेथड जो मैंने आपको बताया, ये तीनों मेथड नेचुरल मेथड है, तो इसमें जो भी चांसेस होगा कंसेप्शन का, साइड इफेक्ट्स का, वो बिल्कुल नील रहता है. Chances of failure, though of this method are also very high. Might be the possibility कि failure के भी chances इसमें high रहते हैं. So क्योंकि natural चीजें हैं, ठीक है. Now the next method, important method, includes the barrier method. So barrier method जो होता है basically वो second method में आता है basically. And ये जो barrier methods होता है, barrier methods को हम physical methods भी बोलते हैं, physical barriers का नाम देते हैं, physical barrier methods, जिसमें generally we use condoms. इनका जो best example होता है वो हो जाएगा condoms. This is the case. Now in case of condoms के साथ ये होता है कि it is available for both males and females. So males के लिए भी होता है, and it is for both females as well. So both males and females. One of the best example for females is your Saheli that I have already described, which is once a week. This is a contraceptive pill, not you can say condom. So
मेल्स के केस में दैट इज ये जो आपका जो पिल दैट इज बीइंग कैरिड आउट जो होते हैं, तो वो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के ही केसेस में जब हम ये कंसिडर करते हैं ना, दिस दैट मींस दीस फिजिकल बैरियर्स और बैरियर मेथड्स, ये भी फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करता है. ऑलराइट, सो दिस आल्सो prevents any physical meeting between sperm and egg. So ये फिजिकल मीटिंग बिटवीन स्पर्म एंड एग को ये भी प्रिवेंट करेगा. नाउ कॉन्डम्स के साथ एक थोड़ा सा ये जो बैरियर मेथड्स होते हैं इनके साथ एक थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, that this actually gives privacy to the user. So giving privacy to the user, then usually इनका ये हो जाएगा that they can be self inserted. Self-inserted. All right. Now, how they look like? So these are usually made of rubber or latex sheet. तो जो composition होता है ना इनका, वो usually ये rubber या latex के sheet से बने होते हैं. Rubber or latex sheet. All right. So this is the case. So you can see over here also. यहाँ पे आप देखेंगे. So this is for the males that has been for the male that has been given, and this is the physical barrier that has been given for the female, that has been used for the female, जो कि ultimately vaginal tract में insert होता है. So as I already told you कि ये वो method है जिसके through ovum and sperms they are prevented from any physical meeting with the help of barriers. Now such methods are available for both males and females. ये मैंने अभी आपको बताया. That is called condoms, which are the barriers made of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female just before the coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. Insemination को ये basically prevent कर देगा. So this can also prevent conception also, definitely. Nirod is a popular brand of condom for the male that has been used. तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि males and females में अब अलग-अलग categories के आ चुके हैं, जिसमें कि Nirod is one of the popular condom for males, and use of condoms has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting any STIs or AIDS. सीधी सी बात है. Any kind of barriers, they are also going to prevent any kind of sexually tract infections, you can say. STIs means sexually tract infections. All right. Both the male and the female condoms are disposable. They can be self-inserted, giving privacy to the user. तो ये इनका importance होता है. So they can be self-inserted, they're giving privacy to the user without any kind of contact or without any kind of contraction from any kind of sexually transmitted diseases, STDs. So this is the second method. All right. Now the third method basically involves the diaphragm walls and cervical gaps. So the third involves, it is diaphragms, walls and cervical gaps. तो ये हो जाएगा. Clear? So in case of the diaphragm walls and cervical caps, जब मैं इसकी बात करती हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है for females. This is also another method which is only and only used for females, and these are also ये भी barriers की तरह होते हैं, which are usually made of rubber that are inserted into the female reproductive tract in order to cover the cervix during the coitus. So as the word is suggesting, cervical caps. तो ये जो होगा, this is used only in females, and that it covers the cervix. All these devices, they cover cervix.
They cover cervix during coitus or sexual contact, you can say. All right. So that's why they also prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. They are also reusable. So they can be reused as well. Spermicidal creams, jellies, and foams, they are usually applied along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. मतलब ये जितने barriers हैं, इन barriers के साथ अगर contraceptive creams, jellies एंड फोम्स का एप्लीकेशन किया जाएगा तो ये इनके कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू को, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को काफी हद तक इंक्रीज कर देते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड मेथड थ्रू व्हिच द chances of conception can be prevented. That means diaphragm walls and cervical cap. And remember, it is only for female. You must remember that कौन सा मेथड सिर्फ मेल्स के लिए है, कौन सा मेथड सिर्फ फीमेल्स के लिए है, एंड कौन सा मेथड स्पेसिफिकली दोनों के लिए एप्लीकेबल है. So one is the natural method, one then that is meant for both of them. अलग अलग methods अलग अलग male and female के लिए होगा. Then there is your this physical barriers जो कि जिसमें examples हमारे थे, that is for both males and females also. And then the third comes up the diaphragm walls and cervical caps जो कि ये सिर्फ और सिर्फ ये यूनिसेक्सुअल यूज के लिए ही है, and that is only meant for female. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. जस्ट अ मोमेंट. ना जो इसमें आपका जो मैंने जो ये तीन मेथड्स बताए, the three methods that we have discussed, ये तीन methods हो गए. Apart from that, there is another method, the fourth method, and that is considered to be as the intrauterine devices. Intrauterine devices, जिसको हम IUDs बोलते हैं. So as the word is suggesting, ये भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा. So this is again only for females. ये भी सिर्फ females के लिए होगा. All right. Now another effective and popular method is the IUD. So as the word is suggesting, ये जो devices होते हैं ना, these are actually inserted in uterus. All right, in the uterus of females. Sorry, by expert doctors or nurses. ये बिना डॉक्टर्स एंड नर्स के थ्रू इनका इंसर्शन नहीं हो सकता. So these devices, that's why they are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. And these devices, they are presently available as the non-medicated IUDs. इनकी भी तीन categories होते हैं. Medicated IUDs, then there is non-medicated and hormone-releasing IUDs as well. So जैसे कि non-medicated IUDs का example जो हो जाएगा वो lipase loop होगा. Then there is copper-releasing IUDs, जिसमें कि आपका copper T आता है, copper 7 and multilode 375. This is very very important क्योंकि ये सबसे ज़्यादा frequently used होने वाला method है for preventing pregnancy. One of the most ideal contraceptive method में अगर इसको माना जाता है तो वो ये होता है. So this is one of the ideal contraceptive method, you can say. Ideal contraceptive method. Remember this. ठीक है. तो इसमें नॉन मेडिकेटेड में लिपेज लूप हो गया, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 मार्टिलो 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में प्रोजेस्टासर्ट एंड एलएनजी 20 आता है. आईयूडीज का मेन फंक्शन ये होता है ना कि ये फेगोसाइटोसिस कराते हैं स्पर्म्स का. फेगोसाइटोसिस मींस टू, एंड ये डायरेक्टली एनगल्फ कर लेंगे उनको. दे विल ट्राई टू ईट इट. ऑलराइट. सो विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयंस जो रिलीज होंगे, जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे. So these copper ions, they suppresses the sperm motility. That means उनके tails को suppress करते हैं, and also the fertilizing capacity of the sperms.
The hormone releasing IUDs, in addition to this, is primarily responsible for making the uterus unsuitable for implantation. तो ये basically क्या करते हैं कि ये uterus को ही unsuitable बना देंगे implantation के लिए, and the cervix, that means the cervix part of the female reproductive tract, which is hostile to sperm. So that's why they have a very high contraceptive value. IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy or children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. ये पूछा भी गया है that which out of all the methods सबसे ज़्यादा widely used method कौन सा है? So it is the IUDs only. All right. So this you need to know it. Now, इसमें आप देख सकते हैं, this is an example that has been given over here. ये copper T का example है, यहाँ पे mentioned है. This something looks like this. ये इसी तरीके से जाके insert हो जाता है. All right. So this is the case. So this is about the fourth method of which is called as the IUD, that means intrauterine devices. All right. And rest of the methods and the content we will be discussing up in the next lecture. In your second part, जिसमें कि हम जो 2-3 आपके contraceptive pills and then sterilization का method है, and apart from that, then there is your MTP, इसके बारे में discuss करेंगे, sexually transmitted diseases discuss करेंगे, and the last section of this chapter, which is STDs, sexually transmitted diseases, उनके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे, and we will also be talking about that aspect as well. All right. So till then, keep learning, keep revising, and practice the PYQs that are being uploaded to you and that are being granted to you, so that it is going to maintain your efficiency of learning. Thank you.